Hello and welcome back, folks. You are watching the eISL Season 2 playoffs, day number 1, as we move on ahead to the second semi final matchup that we have in store for you. This one is going to be an epic showdown. On one side, we have the King of Lands, Northeast United FC, taking on the momentum train builders right now in the form of Kerala Blasters FC. I'm Fixes, joined along by TT. TT, you've seen Kerala Blasters FC play. Now tell me, what are we going to expect out of them when they go up against Northeast United FC? देखिए, स्पेशली पहले तो इधर मैचअप देखना होगा लाइक कौन किसके अगेंस्ट जा रहे हैं सबसे पहली बात। और मुझे लगता है लोकमन्यु जिस तरीके से शुरू किए थे, हो सकता है कि वो एक बार फिर से इधर स्टार्ट करते हुए दिखे। ऑन द अदर हैंड सारांश हम जानते हैं वो स्टार्ट लेते हैं यूजुअली नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लिए। सो सारांश वर्सेस लोकमन्यु बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है वो मैचअप। एंड उसी सेम जगह के ऊपर इमद वर्सेस शुभम। तो कोई भी तरफ हम अभी कह नहीं सकते कि ये गेम जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि लोकमान्य लाइक पिछले गेम के एंड के बाद उनके तो स्टेटमेंट्स आपने सुने ही होंगे कि जब लैन की Yes. बात आता है तब मैं खुद को बैक करता हूँ। तो कॉन्फिडेंस तो फुल्ली है आज। Confidence, I think, is there, no doubt. But when you're talking about the scenario of LAN, at one side, when you look at your opposition, you've got Saransh Jain. And I think he's got the equal amount of experience or even more when it comes to being in such situations. And I think this is where Lokmanyu gets truly tested. Of course, Lokmanyu did cross that first hurdle. He did manage to beat Crusher, and I won't be surprised if today he manages to pull off another upset, beating Saransh Jain. But when it comes down to situations and moments like this, Saransh has been curated, crafted for LAN events. And along with that, if you got a high flying player like Imad in your team, what do you do, right? It even gets even tougher for Kerala Blasters FC. As there you go, the schedule in front of us. This is the final fixture of the evening, ladies and gentlemen. The leg one of the semi-finals, as Kerala Blasters FC and Northeast United FC are going to be clashing off against each other. And this is going to be a really nice matchup because, all right, last time when these two forces faced off, it was Northeast United FC taking that victory, right? But this time, the situation, the circumstances are quite different because Kerala Blasters FC, they are steamrolling. Every single opponent that has come their way has bowed down to them. And the Manjapara Tuskers, they are starting to feel it. Now, this is the time where I want to see who goes up against who. Are Kerala Blasters FC going to stick with the same order in terms of who's going to play? As we take a look at the matchups over here, as well, I'm pretty sure for Northeast United FC, things will be started off by Saransh Jain, but no, that's Oh. not the case. So I think for Kerala Blasters FC, they're going with their ideal starting lineup. So it's going to be Lokmanyu, then Shubham will play the third game. But here's the change. Imad comes in first, and quite understandably makes sense because Saransh Jain, you would want him to be there in those high pressure situations, right? If, let's say, if things go a little down south, that is where I guess Saransh has come in mind that he wants to be the one who takes up Shubham. Because Shubham, he's a player. You cannot really put him out of the discussion, right? He's one of those guys who has got on to beat players, not just like, CJ, but also the other stalwarts into the game. Just recently, he's managed to best out Saki. So at this point, somebody needs to put a full stop on Shubham. या आज सारांश को शायद इसी वजह से इधर आखिर में रखा गया है। एंड मे बी उस जगह पे एक और भी जो है वो कारण हो सकता है, क्योंकि देखिए इमाद की अगर बात किया जाए वो पिछले कुछ गेम से वो शुरुआत करते हुए दिखे हैं। तो ऐसा नहीं है ये एक फर्स्ट टाइम है, इसके पहले भी हम देखे हैं कि इमाद को शुरू करते हुए इमाद के जितने भी मैजिक थे, इमाद जो क्रिएटिविटी लेके आते हैं, जो वर्सेटैलिटी लेके आते हैं, क्या वो लैन के अंदर भी कंटिन्यू होगा? वो कहीं न कहीं आज पता चलेगा। अगर होता है देन ये वन ऑफ दोज़ क्लब होने वाले हैं जो कि शायद जो विनर टाइटल के लिए करारा क्या मतलब कुछ अलग लेवल का टक्कर देने वाले हैं, जो कि सब के सब क्लब्स इधर जो 4 क्लब्स हैं वो चारों के चारों क्लब्स दे रहे हैं। लेकिन फिर भी उनमें से भी अगर किसी को आगे रखना हो लाइक कुछ-कुछ क्लब्स में से, तो मैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को रख सकता हूँ। लेकिन वही बात है, सब चीज़ आता है इधर एक्सपीरियंस एंड परफॉर्मेंस के ऊपर। लैन पे सिनेरियोज़ अलग है और इस
इस सिनेरियो पे जो सबसे ज़्यादा बेहतर परफ़ॉर्म करेंगे, वही कहीं न कहीं आगे जाते हुए दिखेंगे। Of course, I mean, at this point, the kind of a junction that we're in, it's going to be very difficult for Lokmanyu. I think he's also gonna be taken aback a little bit because he might have thought that Saransh might come to play first. But like you said, right, recently over the past couple of days, we've been witnessing Imad even starting. But then again, Northeast United FC weren't really feeling the pressure, right? They knew that they had secured their slot into the playoffs, but a little bit of a head-to-head of how these two clubs have fared off. And you could see that massive difference in terms of the goals being scored 76 from the Highlanders. And this is where Kerala Blasters FC might be wondering if they are fighting above their belt. जी हाँ, देखते हैं लाइक क्या होता है इस पूरे सिचुएशन के अंदर बट एज़ ऑफ नाउ देखिए पिछले गेम की अगर बात करें लाइक सेमीफाइनल 1 की जो फर्स्ट लेग आज खेला गया, उसके अंदर आके हम लोग देख पा रहे थे कि एफसी गोवा, जो क्लब अभी तक एक भी गेम नहीं हारे थे, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा लाइक आउट ऑफ ट्रैक चले गए। Right. स्पेशली वी शर्मा जिनको लेके सब लोग डरते हैं, लाइक वी शर्मा आ रहे हैं हमारे सामने, तो उनको लेके डरते थे। तो वही बात है लाइक आप जब एकदम ऑनलाइन से शिफ्ट करते हो लैन के ऊपर, लैन पे शायद आपको उतना ज़्यादा प्रैक्टिस ना हुआ हो, आपके इंडिविजुअल लेवल पे, तो वो कहीं न कहीं जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। और अगर एक बार आप प्रेशर लेना शुरू कर दिए और उसके ऊपर आपने गोल भी कंसीड कर लिया, देन उधर से कमबैक करने के चांसेस बहुत कम हो जाता है, जो कि हम लोग इधर वारसी के केस पे एंड दूसरी जगह पे वी शर्मा के केस पे देखे कि दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लिए थे, जिसकी वजह से उनके गेम पे वो इम्पैक्ट आता हुआ दिखा और शायद उनकी तरफ से कोई भी कमबैक का नहीं देखने के लिए मिला। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो शायद उतना लाइक नहीं सोच रहे थे या फिर लाइक उनके ऊपर प्रेशर था बहुत ज़्यादा। Yeah, I mean, the pressure is definitely going to be there, but considering the fact that both these clubs are so well acclimatized to play in these LAN environments, I'm kind of really keen to watch what and hear what the players have to say. So over to you, Suyash. Give me some masala. Thank you, guys. I'm not the one giving the masala. If there's anything that's going to come, it's going to be from the players. I'll come to you first, Saransh. पूरे दिन वेट कर रहे हो आप गेम्स पे गेम्स देखे हैं excited to finally get going? Yeah, a bit tired as well. I mean, it's been a long day. Last game of the evening for us, of course. Semi-finals time. So yeah, very excited to get things started. But how fresh has that man at the back? You can't see him in the frame, but I'm talking about George, who is the coach of Northeast United FC. How fresh has he kept you, and how much has he helped you guys this season? Yeah, even apart from eISL, he's been really helpful to me. He's been coaching me in FGS as well, and I've managed to get like a few decent finishes. So I think he's been very important to me in my season and to Imad as well. So hopefully, yeah, somewhat what he gives us, like tips and all, that help us out. Shubham, I'll come to you now. You're already a little warmed up. You've played one fixture already. What's the thought behind sending Lokmanyu for the first game? कौन सा ऐसा वार है जो आपका सिपाही करेगा यहाँ पे? So basically, as I told before this game also that we have changed it up since our first 5 games of the league stage, and now there's 100% trust, so that's why. And most of the players now tell us that the first game is the most clutch game rather than the third one, since co-op is second. So yeah, there's 100% trust. That's why he's playing the first game. Do you feel you're peaking at the right time? You almost didn't make it to the playoffs, and then you did, and then you did what you did in the last match to make the semi-finals. Do you think you've got that momentum now, almost actualizing that fairy tale story that you're on? Yeah, that's as you said. Like there's a fairy tale story behind it, right? So we are just gonna take it one game at a time, and hopefully we'll clutch it up. Right. And lastly, Saransh, I want to ask you about Imad as well. Firstly, the logic behind sending him for the first game, and what do you think about his evolution as a FIFA player from last season to this season? Yeah, I think he's grown a lot. Like from last year, he's been doing really well in FGS. He's beaten some of the top ranked players, not just in India but all over Asia. So, yeah, of course we trust each other a lot, and we're playing very well in the tournament so far. And hopefully, yeah, we can keep the form up. Lastly, any chatter planned to distract you guys during the game, your opponent, or throw them off? Yeah, Namyallo. Oh, I thought he was gonna say that we are close friends, so we won't do that. But yeah, no, I won't do it. You should know better, Shubham. There's no close friends when it comes to the playoff. I All right. faced that a while ago, so yeah. No, nothing from me. All the best for the game. Yeah, thank you. All right, so that was our pre-match interview with Saransh and Shubham, guys. You asked for masala. I hope you got enough. And if not, the game is going to ensure that happens. Over to you guys.
All right, we can work with that, right? Just when we were thinking that things are going to be a little friendly, little sunny, Saransh calls for war, and Shubham was left unguarded. Did not see that coming. Surely he gets his sweet revenge in the game because these two forces are going to fight off against each other. And one of the other takes that I've had was again how influential George has been to Saransh, being his own personal coach and also now guiding Northeast United FC. I think I'm gonna wait and just watch him, guide his players to victory. What about UTT? जी हाँ, देखिए लाइक मेरे लिए भी अभी मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ लाइक क्या आउटकम आता है। देखिए पिछली बार अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं सिनेरियोज़ बहुत ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के हित पे रहा है जब लीग मैचेस हुए थे। और उनके अगर हेड टू हेड की बात किया जाए ओवरऑल पे लोकमन्यु एंड इमाद की, तो लोकमन्यु का देखिए एक बार फिर से कहीं न कहीं जो रिकॉर्ड है, वो शायद जो गोल स्कोर है वो कम हो सकता है, मैचेस वोन कम हो सकता है। बट वही बात है ना कि आप जाके लाइक मेन मोमेंट पे क्या कर रहे हो? और मेन मोमेंट पे इधर लोकमेन्यू चल रहे हैं। और ये पहला टाइम होगा इमाद की तरफ से जब वो लैन पे खेलेंगे एज़ ऑफ नाउ ईआईएसएल सीज़न 2 के अंदर ये उनका पहला गेम है। तो अभी देखना होगा लेकिन इमाद की तरफ से क्या परफॉर्मेंस निकल के आता है। सो लोकमेन्यू एंड इमाद दोनों ही कोशिश तो यही करेंगे कि वो अपने क्लब को एक जीत के साथ स्टार्ट दे। बट हाँ, वो दोनों के लिए तो एक साथ पॉसिबल नहीं होने वाला। कोई एक जीत लेके जाएँगे बट वो कौन होंगे? वो देखने के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। But at this point, at the current junction that we're in, I think we can just throw the past records out of the window. Whatever has happened, I think it's a हुँ। whole different Lokmanyu. Imad again has been in a stellar form. I've barely even seen Imad struggling for even once. There have been few tight games, right? I think one of the sweatier ones was against FC Goa, but still somehow they managed to see it through. And I think the kind of the kind of a form that the Highlanders are running in, it's very difficult because there are few clubs who are really good online, and then there are few good clubs who are really good on land. I think Bengaluru FC showed us how strong they can be when it comes to be playing in land, and then there is a club called Northeast United FC who are strong in both aspects. So when you've got the defending champion Saransh coming in with you, when you've got a coach with you who's got a lot of experience playing in the E-Prem leg for Burnley, if I'm not wrong. So you kind of feel yourself a lot that you feel confident going into this game. But I think for Kerala Blasters FC, they have buried the hatchet. They knew what has happened in the past does not matter because of that swinging momentum that they're going through. Right? Lokmanyu and Shubham are now like a wrecking ball. Every single opponent that stands in their way, they're just kind of trying to break past them. And now it's going to be such an arduous task for Imad to deal against this experienced Lokmanyu over here. देखिए, एक चीज़ जो हम लोगों को देखने के लिए मिला इस पूरे ईआईएसएल सीज़न 2 के अंदर लाइक 2 क्लब्स के इधर हम लोगों को लाइक कोचेस देखने के लिए मिले और वो दोनों क्लब इधर टॉप कर रहे हैं। लाइक कर रहे थे। बट अभी सिनेरियोज़ जो है वो आमने-सामने वाली बात है। जिधर एक तरफ इमाद बैठे हैं, दूसरी तरफ लोकमैन। दोनों के बीच में लाइक थोड़ा बहुत डिस्कशंस इधर चल रहा है लेकिन जब वो गेम पे चले जाएँगे देन सब लाइक दोनों ही इधर पूरा फ़ोकस करने वाले हैं इस गेम के ऊपर क्योंकि ये है सेमीफाइनल 2 लेग नंबर 1 आज के दिन पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक लीड के साथ शुरू करें। आज अगर लीड के साथ शुरू करेंगे देन एक का कहने के पॉजिटिव वाइब लेके जो है वो कल आता हुआ देखने के लिए मिलेगा वो क्लब बट वो कौन होंगे? ऑलरेडी लाइक केरला ब्लास्टर्स ऐसी एक गेम जीत चुके हैं और जिसके साथ उनको एक मोमेंटम कहीं न कहीं मिलता हुआ दिखा है। बट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जैसे कि आपने कहा कि सरांश के पास एक्सपीरियंस है, उसी के साथ-साथ उनके पास उनका कोच है एंड इमाद हम देखें वो क्रिएटिव गेम्स जो है वो दिखाते हुए तो क्या नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जो है वो अपने पहले ही गेम पे एकदम धुआंधार शुरुआत दे पाएंगे वो अभी देखना होगा लाइक दोनों ही क्लब के फैंस स्पेशली केरला ब्लास्टर एफसी के फैंस तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे उनके परफॉर्मेंस को लेके क्योंकि शुरुआती सीजन लाइक उतना खास था नहीं उनके लिए बट फिर भी जैसे कि इधर लाइक शुभम एंड लोकमेन्यू दोनों ने ही कहे कि उनके फैंस जो है उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए। तो हाँ, वो सपोर्ट की वज़ह से वो आज इधर है क्योंकि देखिए एक बैक पे कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए और अगर आपका फैन आपको सपोर्ट करे और पूरा फैन बेस आपके सपोर्ट पे रहे,
तो आपके अंदर से ही वो कहीं न कहीं एक आवाज़ आता है कि चलो आज करके दिखाते हैं और वो अभी करके दिखा भी रहे हैं। बट गेम चालू होने के बाद ही पता चलेगा कि ये सेमीफाइनल 2 के पहले दिन का लेग 1 का विनर कौन होने वाला है। Yeah, I think considering the fact that you kind of brought in a really important a pointer about the support of the fans. I think Kerala Blasters FC, even Shubham acknowledged that they have been supporting them right from the start, and not just the moment when there was a phase earlier, and also they were dropping so many games. They were on the verge of getting eliminated, and then also the support was still strong. And look at where it can take you, right into the playoffs. And it's just not these two players are playing for the club. It is the support of the entire Kerala Blasters FC fans also, that is kind of giving them that hand right behind the shoulder, a pat on the back even in the worst times. But let's talk about what's on the line over here. It's leg one, like we said, right? And in those games where you have two legs, whichever club wins the first four games goes on to the grand final. So let's just assume that Northeast United FC win all three of the games tonight and Kerala Blasters FC get nothing. Still, they have a fighting chance tomorrow. If they can win three more games, then it's going to just come down to a co-op matchup. If that's the way it is, right? Whoever wins for the first four, they go on to be the victor. And yes, I forgot. Yes, I forgot. Imad is really quick with solving his Rubik cube. Last season, he used to get that along with him. This season, he's ensured that he gets it, because we've seen a lot of athletes, in fact, in the e-athletes, not just limited to FIFA, also out in different genres. They have those plushies, but Imad, being a smart kid, he is, and he impresses everybody with his art with the Rubik cube. But enough talking banter. I think the players have their weapons right on their hands, and it is going to be game time. Imad versus Lokmanyu TT. क्या लगता है? Who's going to get the first goal? आई थिंक अभी लोकमेन्यू के फॉर्म को देखते हुए ये प्रेडिक्ट करना बहुत टफ है। लोकमेन्यू की अगर बात किया जाए लाइक ऑन एनी अदर डे अगर वो लैंड के बाहर होता तो मैं कह सकता था कि यार ये इमाद होने वाले हैं, लेकिन जिस तरीके का फॉर्म इधर दिखा रहे हैं लोकमेन्यू, जो एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस वो शो कर रहे हैं, उससे मुझे लग रहा है कि शायद कोई भी तरफ जा सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड इमाद के स्किल्स के ऊपर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकता, क्योंकि अभी तक वो जो करके दिखा के आए हैं तो शायद ही बहुत ही कम प्लेयर्स जो है वो हम लोग को eISL सीजन 2 के अंदर दिखाते हुए दिखे हैं। वो मेनली उनका क्रिएटिविटी है, लाइक वो लॉन्ग शॉट से भी गोल करते हैं, शॉर्ट पास से भी गोल करते हैं, वो कुछ भी करके गोल कर देते हैं, बट वो करते हैं, तो उस चीज को रोकना जरूरी होगा आज लोकमेन्यू को। Yeah, and this is one of those things even Lokmanyu said during his interview, right? Where he quite pointed out that Crusher thought I'd be playing a different style of FIFA. I changed it tonight. And that is the versatility I think Lokmanyu puts on the table. But, against Imad, it is going to be tenfold tougher, because whatever you put through at Imad, he always has an answer, always a trick up his sleeves. And that being said, folks, we are through with the kickoff. Kerala Blasters FC from left to right against Northeast United FC from right to left in their whites. And, Lokmanyu, his intention will, of course, can be to try and build up a little slow and then get all the pieces right and then take that shot and score and get that early lead against Imad. शुरू हो चुका है और पहले ही 3 मिनट के गेम पे एक चीज तो आप देख पा रहे हो, क्या शुरुआती में गोल स्कोर करने की कोशिश, मौका अभी भी है। रोनाल्डो बॉल उनके पास था, अभी 1-2 केरला ब्लास्टर्स एफसी, लोकमान्यू अभी भी बॉल देखिए, बॉल प्रॉपरली अपने पास रखते हुए। आज उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, बॉल रखो, धीरे धीरे करके लेके जाओ, लेकिन बॉल खोना नहीं है। बेहतरीन क्रॉस, ओह माय गॉड, ये पहली बार के लिए हम लोग देखे लोकमान्यू की तरफ से सीजन के अंदर। All right. Lokmanyu, he's in the mood. Short corner being taken, and I'm pretty sure Imad would have been caught aback a little bit. Did not see that long pass coming in like that. And next time, he's ought to be prepared. And I think Lokmanyu
has a set plan against Imad also, and this really comes into play when you've got so much experience, not just playing on LAN, but playing FIFA for so many years. I think it's almost been 8 to 10 years that this guy has been grinding it out at the competitive stage. And again, Wow. he's broken free with Jairzinho. He's 1v1 with the keeper, but no! Could not green time it. Could have done 146 other things, but resorted into taking a direct shot, which clearly states that Lokmanyu needs to keep his calm. देखिए प्रॉपर आउटकम एक बार फिर से मौका था। इमाद के चेहरे को देखिए, इमाद के एक्सप्रेशन देखिए, वो जस्ट इधर सरवाइव कर रहे हैं। बट लोकमैन्यू वो इधर शॉट लेने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाले। इस बार बैक ऑफ द नेट फिनिश होगा। लोकमैन्यू लीड के साथ शुरुआत करते हुए और पहला 20 मिनट उसमें एक चीज तो पता चल चुका है कि लोकमैन्यू ऑनलाइन पे वो जैसे भी हो, लैंड पे वो शेर है और ये शेर को रोकना बहुत मुश्किल है। Yeah, and especially when you wound him, those blood trickles just falling down, and Lokmanyu, he wants to assert dominance. He wants to hurt Imad, and again, he is on that path. I've never seen Imad have such a rough start ever in the Season 2 campaign. And Lokmanyu, it was the first 15 minutes, he's already taken 3 shots, and this could be another chance. Oh my goodness. Thankfully, it's offside. It's not gone down south. It's all right. But KBFC, Lokmanyu, impressive, ecstatic. He's been phenomenal. आज देखिए उनके गेम के अंदर वो चेंजेस नजर आ रहा है। वो जिस तरीके से थ्रू बॉल्स खिला रहे हैं वो शायद ही हम लोग इसके पहले देखे होंगे लेकिन उनकी तरफ से एटलीस्ट eISL सीजन 2 के अंदर तो हम लोग नहीं देखे जब ऑनलाइन सीरीज चल रही थी। बट आज के दिन पे वो हर एक इंडिविजुअल ओपोनेंट के लिए इंडिविजुअल प्लान्स लेके आए हैं और वो प्लान अभी तक बहुत ज़्यादा काम आता हुआ। देखिए बॉल कंट्रोल देखिए और उसी जगह पे विद बेलिंगम, ओह नो, निकाला तो गया था बट ये एक फाउल है और जिस जगह पे ये फाउल किया गया है इधर से गोल कंसीड कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। देख के खेलने की जरूरत। थ्रू ढुलीत हम जानते हैं बहुत ज्यादा पावर जनरेट होता है बॉल के ऊपर। शॉट लिए गए बट नो, इस बार वैंडेसार या हकीमी के हेड पे लगा था बट हाँ डिफ्लेक्शन हुआ। But whatever the case, it's still not a second goal. But yes, Lokmanyu. No, I did not expect to see such antics from his side. And he's putting it all for Imad. Seems like he's savoring every single moment. But knowing Imad, he's got something up his sleeves. Oh, an outside footer attempt with Lionel Messi. Goes out for a corner. And Imad, he cannot let Lokmanyu dominate the possession just like that. He needs to get back in, and what better way than scoring a Trivela or maybe a longer finesse shot. But no, Lokmanyu is prepared. He knows that he cannot give Imad such a space just outside the box because, well, a lot of few players, in fact, one church gave that opportunity to Charanjot, and you know what he converted that and how he converted that into a goal. Now with Ronaldinho from that right wing, and to press him through, pass on towards to Bellingham. Ronaldinho back again. Nice set of passes going on over here. This is again typical Lokmanyu, getting a little bit of that older touch. But Imad, being cautious as ever, did manage to avert the threat up until Ronaldinho. He's beaten his marker with Kylian Mbappe. He was bound to score, but that hits the crossbar. And Lokmanyu cannot believe what just happened. ओह माय गॉड, एक बहुत अच्छा चांस था लीड को दुगना करने की बट वो अभी के लिए नहीं हुआ। फिलहाल के लिए बीचों बीच बॉल जाता हुआ एंड देखिए मौका बन चुका है Nice. शॉट लिए बट वर्जिल वैन डाइक के साथ आज लोकमैन्यू सिर्फ और सिर्फ उनके अटैक पे ही नहीं, उनका डिफेंस भी अभी कोई ज्यादा तोड़ नहीं पाए हैं।
क्योंकि 1-0 से ही वो जीतते हुए देखने के लिए मिले थे पिछले मैचअप के ऊपर, और इस गेम के अंदर भी वो 1 गोल स्कोर कर चुके हैं और उनके डिफेंस को तोड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है इमाद के लिए। इमाद इस बार जा चुका है, डिफ्लेक्शन, मौका, ओह माय गॉड! एक सेव आता हुआ, क्योंकि उतना पावर नहीं था शॉट पे, बट फिर भी इकलौता मौका फर्स्ट हाफ के अंदर, और वो भी इधर कन्वर्ट नहीं कर पाए। Oh, no, Lokmanyu had shown his defensive prowess, and now we're getting to see some of his attacking delights. And Imad, clearly, you can see him struggling, especially in trying to keep possession. Because if the possession stats do come up, we know it's going to be heavily favoring Kerala Blasters FC. I think it's kind of a similar matchup we're getting to see, where you have CJ and V Sharma in action, where CJ was keeping most of the possession and he was constantly pressing. And Lokmanyu again just trying. Imad's defense has been a little distraught tonight with Mbappe. Oh, wanted to give that pass to Jairzinho, but well read. Nice anticipation from Imad's side. And this is where I think Imad needs to get into talk with his coach, needs to figure out what needs to be done to, stop this menace of Lokmanyu and start scoring his goals and eventually go on to win. But seems like Shubham has given him a secret mantra just to finish, completely behead Imad. And both of these players are now looking a lot in sync, right? Especially when you're winning games together. It's been such a glorious run for Kerala Blasters FC. It's going to be heartbreaking if it breaks over here. देखिए, जिस तरीके से अभी तक ये पूरा गेम चला है, उससे कहीं न कहीं एक चीज़ तो पता चल रहा है कि जो नॉकआउट गेम खेल के आए हैं, उनका मोमेंटम कुछ अलग ही लेवल का है। क्योंकि वो ऑलरेडी आज के दिन पे गेम खेल चुके हैं, और उसी के साथ-साथ एक ऐसे सिचुएशन से निकल के आए हैं, जिधर उनको पहले से प्रिपेयर रहना था कि हाँ, बाय एनी हाउ जीतना है। तो वो चीज़ कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखा है पिछले गेम पे इधर बैंगलोर एफसी की तरफ से, और इस बार केरला ब्लास्टर एफसी कहीं न कहीं जिस तरीके से शुरुआत की है, उससे तो लग रहा है कि हाँ, लाइक वो कुछ जो है वो अलग करके जा रहे हैं। बट जो 2 क्लब्स पूरे थ्रू आउट द लीग स्टेज डोमिनेट करते गए एक दूसरे के दूसरे क्लब्स के ऊपर, वो दोनों ही क्लब जो है शुरुआत किए थे लॉसेस के साथ। इधर तो चलिए अभी भी सेकंड हाफ बाकी है, कुछ भी हो सकता है, बट फिलहाल के लिए बॉल मिला है बहुत क्रूशियल पोजीशन पे। क्या इधर से एक गोल स्कोर करते हुए दिखेंगे? इमाद बिल्डअप पे अटैक, और एम्बापे Oh my God! कुछ करने ही नहीं देंगे आज मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स को। But this is good, right? Ever since the commencement of the second half, we can see Imad. He's not just bowing down; he's fighting back. And this was the first strike towards Lokmanyu's goal, and looks promising. Imad needs to do more of that. Needs to keep on, trying to push in, just like what he's done in the previous attack. But again, Kerala Blasters FC retaining possession, and Lokmanyu, we have seen him. He kind of tends to just switch the pace up and down, sometimes really fast, sometimes just explodes, sometimes, goes for those skill moves in that final third, looks for that cutback. He's literally been doing it all. And I won't be surprised if Lokmanyu takes a shot from outside the box, goes for maybe a finesse or a trivela. But regardless, Imad now regaining some possession from that left wing, tries to push it through with Theo Hernandez, realizes did not have enough men to pass it on to. So a little bit of a routine, back and forth passes with Lionel Messi, Jude Bellingham. Ronaldinho, quick pass with Mbappe, needs to break free, but with R9 did have that room. But again, phenomenal defense coming in, right player switches just when needed, and Lokmanyu looking sharp as ever in his defense. But this time it has been opened up. It's the crossbar again, TT. क्या चल रहा है? ये क्रॉसबार शायद कर्स्ड है, क्योंकि इसके पहले लोकमन्यु का लगा था और इस बार इमाद का, दोनों ही सेम क्रॉसबार पे। बट देखिए, जोक्स अपार्ट, अभी जिस तरीके से गेम चल रहा है, इमाद बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मोमेंटम में दिख रहे हैं, एटलीस्ट इस हाफ के ऊपर। पिछले हाफ पे तो लोकमन्यु का पूरा दबदबा बना हुआ था, बट इस हाफ के शुरुआत से ही लोकमन्यु, ये शायद दूसरा शॉट ऑन टारगेट था, जो कि शायद थोड़ा राइट लेफ्ट होता तो गोल हो जाता। बट उसी जगह पे क्या लोकमन्यु अपने जो एडवांटेज है
उसको दुगना करने की कोशिश कर रही हैं। बिल्डअप पे तो पहुंच चुके हैं। नाल्डिनियो टुवर्ड्स बेलिंगम, रोडोलिप, एम्बापे, मौका बनता हुआ, और इस बार बेहतरीन शील्डिंग फ्रॉम इमाद रॉक्स एंड Nice. सेकंड टाइम एज वेल। Nice. इमाद इधर कोई भी जगह नहीं दिए, और ये जरूरत है जब आप ऑलरेडी 1-0 से पीछे हो, देन सेकंड गोल के लिए आपको रेडी रहना होता है कि कभी भी अटैक कर सकते हैं आपका ओपोनेंट। This is better from Imad if you talk about his defending, to be honest, because what he was doing there, he was not instantly charging in for the tackle, because that is where Lokmanyu wants to bait him. He's been performing those skill moves. He's done that roulette over there. He's been doing some heel to heel, some step overs. He's been doing that all. And Imad is starting to finally feel the heat. And this is where it's just not one mind, it's two minds in play. You've got George, you've got Saransh, everybody sort of kind of accumulating their experience and telling Imad what needs to be done. But I really feel that Imad kind of flourishes when he relies on his own instincts. I want to see Imad take a freaking Trivela here. Do this. And we've seen, Imad in those end moments, he goes for a beautiful cross and then heads it or takes a shot. We've seen him do that all. But tonight, he's been struggling a little bit. Second half, we've seen that little bit of a recovery where he's been quite sound, both attacking wise and defensively. But he's got to do more than that to try and pierce through the defenses of Lokmanyu. पर देखिए इधर सारांश कहने की थोड़ा बहुत चिंतित दिख रहे हैं। वैसे अभी उनका गेम जो है वो आना बाकी है, बट जिस तरीके से मुझे लगता है कि लाइक परफॉर्मेंस अभी चल रहा है इमाद का, वो काफी बेहतरीन खेल रहे हैं। शायद वो गोल आया नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पास जितना टाइम है वो कर सकते हैं। अगर कंटिन्यूअसली ये अटैक वो रख पाए, करते हुए दिख पाए, तो शायद जो वो गोल वो चाह रहे हैं वो आता हुआ दिख जाए। एम्बापे, रोनाल्डो Wow. कर रहे थे गोल की, आ गया है इक्वलाइजर। इमाद रॉक्स फाइनली इस गोल के साथ, और दोनों ही सरांश भी और उनके कोच भी दोनों ही कह रहे हैं चिल, एंड अभी दोनों सेम पेज पे। विनर किन की तरफ से आएगा या ये ड्रॉ पे खत्म होगा, बहुत कुछ ड्रामा बाकी है इस गेम के अंदर, बट एक चीज जो कि फिक्स है वो है एंटरटेनमेंट, जो आप सभी को मिलने वाला है। Yes, now it's like a fresh breath of air into this matchup, right? And Imad had been relentless. He'd been showing some signs of attack, and finally figures his way out with that cut back pass, and then instantly scores pretty standard goal. But this one is something that Lokmanyu did not see coming, and this is where let's hope that Imad can carry forward with this momentum. Has really put Lokmanyu in a tough spot. What does Lokmanyu do? Because had 10-15 minutes passed into it, Lokmanyu would have gone all defense. Now he's got to try and figure out a way to score the winner into this game. And now this is the position where Imad really loves to play from. और ये कहीं न कहीं लाइक खुलने का मौका जो नहीं दिया जा रहा था फर्स्ट हाफ पे, फाइनली उनको वो मौका मिला, और वो उसके ऊपर बैक टू बैक अटैक करते गए, और फाइनली उनको रिजल्ट आता हुआ दिखा है। अर्लिंग हॉलैंड आ चुका है, जिनके साथ वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करते हैं, और हम जानते हैं इमाद के जो लॉन्ग बॉल्स है वो कितना ज़्यादा ऑन पॉइंट रहता है। तो अर्लिंग हॉलैंड का क्या वो रन हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा? अगर मिलेगा तो क्या बेलिंगम की तरफ से वो क्रॉस निकलता हुआ दिखेगा? ये सारा कुछ क्वेश्चंस अभी है, बट गेम बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ 17 मिनट का, और ये 17 मिनट के अंदर कोई भी इधर विनर आएगा या फिर ये ड्रॉ पे खत्म होगा, ये सब कुछ देखने की जरूरत है। राइट हैंड साइड से इस बार किलियन एम्बापे विद लोकमैन्यू को देखिए, उससे भी आज इस गेम के अंदर दोनों के ही वैंडेसार जो है वो आज कुछ अलग लेवल के परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। क्या खा के आए हैं नहीं पता, बट हाँ वो शायद अपने पूरे इस फीफा लाइव का बेस्ट गोलकीपिंग करते हैं। Oh my goodness, what's going on? It's kind of turned out to be a nail biter of a match, and suddenly you could see how the scales are being tipped from this side to the other. And now Kerala Blasters FC. Oh, Lokmanyu did fancy his chances. More like it. One more of this. Maybe with Rudolet. CJ has done this, but now he's passed on towards Eusebio, trying to dribble past the defenders with Jude Bellingham.
Oh, wanted to go for that outside footer shot on that weak foot, but did not happen. And now just 10 minutes remaining into this matchup. Oh my goodness, are we going for some extra time action? What's going to happen? Tell me, TD. आई डोंट नो लाइक क्या होने वाला है, क्योंकि लाइक ये बहुत ज़्यादा प्रेशर बन चुका है दोनों ही प्लेयर के ऊपर। और स्पेशली जिस तरीके से शुरुआत हुआ था लोकमान्यु की तरफ से, उसके बाद कमबैक आना इमाद का वो ज़रूरी था, और इमाद वो कमबैक करके दिखाए हैं। बट इस बार बेलिंगम टुवर्ड्स रोनाल्डो, पेले, बट वो वही बात है, लाइक रेडी रह रहे हैं लोकमान्यु, उनको शायद हर एक मूव पता है कि क्या करने वाले हैं इमाद। बट अभी भी बॉल जो है वो नहीं छीन पाए। शुरुआती में बॉल कंट्रोल भी अपने पास रख रहे थे, इस बार इमाद Wow! ने ब्रिलियंस के साथ दूसरा धागे टैकल किए, लेफ्ट फुट पे लिए, बट वो लेफ्ट फुट पे शॉट था नहीं, एक आउटपुट लिया गया था विथ राइट फुट। ओ माय गॉड, व्हाट अ गोल! ले क्या था ये! और ये सब गोल अगर आप मारते हो लैन में बैठ के लोकमान्य के सामने, जो कि आपके सामने लीड लेके शुरू किया था, तब बात तो है, लेकिन इनमें कुछ बात है, और वो मैजिशियन कहीं न कहीं पहले हाफ पे शायद खो गए थे, लेकिन फिर से ढूँढ के लेके आ चुके हैं इमाद, और ये शायद विनर था इस सेमीफाइनल 2 के लेग नंबर 1 के गेम नंबर 1 की। शायद यहीं पे पूरी बात आके अटकती है, यस। क्योंकि we still have जी। some few more minutes left, and this is where Lokmanyu needs to burst out in that final attack. But Imad, finally, you could see him getting back into his groove, finally deciding to settle in. It's been a long night. Northeast United FC had to be waiting, almost around more than 8+ hours, and finally we get to see them in action. They took some time, but now they feel settled in, feel a little rested as Imad rocks. I mean, he's pulled off a miracle again, and it's not the first time he's done something like this. Because now next up is going to be co-op, and Lokmanyu, you kind of feel gutted for him, because initially the way he started off, there were so many chances that went awry, and after that, even he's starting to feel, right, this game's going out of his hands, and with barely few minutes remaining, just 5, and Lokmanyu has at the very max just an attack or two, and he has to make it count, at least score the equalizer, and then maybe go to the extra time and think of other ways to deal with Imad right now. But I think he's opted for another slower build-up. This time a little bit of room on that left wing with Theo Hernandez, has some passing options. Oh my goodness, that extra pace, kind of unnecessary, but will take some time. Still has, however, kept the ball on himself, and you can see the final attack will come down, and the ball getting stolen away back to Lokmanyu. Oh, this was a close one, and I feel like it's done and dusted. ये इस बार 2 मिनट का रेड टाइम है। कभी-कभार 1 मिनट के अंदर भी बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन अगर वो बॉल मिले तब। तो बॉल इधर नहीं दिया जाएगा, और इमाद रॉक्स विद दैट फिनिश करते हुए दिखेंगे, और फाइनल व्हिसल इधर आ चुका है। काफ़ी अच्छा गेम था शुरुआती लाइक फर्स्ट हाफ पे लोकमेन्यू की तरफ से, लेकिन जितना ज़्यादा गेम आगे बढ़ता गया, उतना ही ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने लगे इमाद कि उनका जो गेम है वो लोकमेन्यू समझ चुके थे। देन बारी था इमाद की कि इमाद लोकमेन्यू के गेम को समझे। तो जब सेकेंड हाफ आया वो समझ चुके थे, और कहीं ना कहीं वो न्यू स्टाइल को भी काउंटर करते हुए दिखे। सो लोकमेन्यू, या वी नो कि काफ़ी ज़्यादा कुछ चेंज हुआ था उनके गेम पे, लेकिन इमाद अपने ब्रिलियंस और अपने वो कुछ मैजिकल स्किल्स के साथ एक बार फिर से जीत देते हुए दिखे अपने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को। This was a game of two halves where we saw Kerala Blasters FC dominating the first one, but second half, I think Imad kind of started showing those sparks, eventually scoring those 2 goals. And the second one was nothing short of a beauty. The way he just managed in that clutch situation, decided to just kind of take the ball from the right foot to the left foot, just heel it away and then score that shot. Even Saransh could feel that. You could see him happy, you could see him smiling. But yes, Northeast United FC, they have gotten through the first hurdle. Now comes the co-op match. Now this is where Lokmanyu and Shubham need to rally their minds together and get their forces, because Imad and Saransh, they are one of the strongest co-op unit in the entire eISL. यस, और
इसी वजह से कहीं न कहीं प्रेशर शायद और भी ज़्यादा होगा इधर केरला ब्लास्टर्स एफसी के ऊपर, क्योंकि केरला ब्लास्टर्स के लिए लाइक उनका एक वीक पॉइंट रहा है उनका को-ऑप गेम। तो और पिछला गेम भी अगर बात किया जाए लाइक जो वो परफ़ॉर्म किए थे मुंबई सिटी एफसी के अगेंस्ट, वो भी कहीं न कहीं जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक था। लाइक वो जीत नहीं पाए, वो भी एक ह्यूज स्कॉटलैंड के साथ वो हारते हुए दिखे थे। तो इधर को-ऑप पे जो है वो ऑब्वियसली इधर उन लाइक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के पास एक अच्छा खासा एडवांटेज रहेगा। Yeah, I think advantage is definitely going to be there, and this is where I think Kerala Blasters FC kind of have been put on a little bit of a halt in terms of their momentum, right? Imad was supposed to do it because Lokmanyu, he's had his hands hot because just a couple of hours earlier he managed to defeat one of the strongest players, that was Crusher, and make his way to the semi-final. So he had that momentum rolling, he had the ball in his court, and that is the way he started off, and he was creating a plethora of chances. But I think for Imad, it was all about to kind of withstand his attack in the first half. Then the second half comes in, and this is where every single time Imad has taken a pause or he gets a chance to communicate with his coach and Saransh. I think he's gotten some really good values of really good insights, little some inputs of what needs to be done. And the first goal might have been a little scrappy, but the second goal was nothing sort of that this moment. Oh, sheesh, that hurt. And yeah, even Lokmanyu felt it. Did burn him down a little bit, but now he needs to recover. He knew this was a close game. It's not like Northeast United FC are unbeatable. So pretty sure both these lads will be trying to take their hands. But this time, when you have Saransh also alongside you, Imad is going to be pretty happy. जी हाँ, इमाद तो हैप्पी होने ही वाले हैं एंड नॉट ओनली दैट लाइक मुझे तो लगता है कि इधर इस पूरे सिनेरियो के अंदर सारांश भी काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि जब इमाद इधर गोल कंसीड किए थे, सारांश भी साइड से थोड़े बहुत टिप्स एंड समथिंग दे रहे थे लाइक जो उनको लग रहा था कि हाँ गेम के अंदर चल रहा है कि ये करो वो करो। फिर उनके साथ उनके कोच भी थे, तो सब मिला के अगर देखा जाए तो लाइक झटके में कमबैक आता हुआ देखने के लिए मिला। तो वो कहीं न कहीं काफ़ी अच्छा था। और इस बार जब सारांश भी आएँगे, अभी देखिए लोकमेन्यू का एक्सपीरियंस ऑन द अदर हैंड हम लोगों को इमाद का मैजिक देखने के लिए मिल रहा था। और इस बार नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की तरफ से एक्सपीरियंस और मैजिक दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन दिखेगा। ऑन द अदर हैंड हम लोग को एक्सपीरियंस एंड एग्रेशन का कॉम्बिनेशन दिखेगा। तो सब मिला के अगर देखा जाए, कुछ वंडर्स हम लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं। Yeah, I was just about to say that I've had this itch in my heart that says that maybe we're in for a surprise in the co-op matchup. I think Shubham coming in, he's also flying high along with Lokmanyu. He can produce something magical tonight in the co-op game. He might be able to instill some hurt out of the hearts of the Highlanders, but it's so easier said than done, right? Because when you're looking at Northeast United FC, there are multiple ways they kind of tend to build up their attack, and when you've got Saransh, who's been kind of meant for moments like this, you give him a pressure matchup, you give him a high octane situation, he will clutch it through. And he is also the defending champion. Is sitting in that same studio, same place. He's been there. He's done it in the past. He knows how dirty he needs to go down the drain to try and get his team with a victory. So Northeast United FC would be looking for a whitewash over here, but Kerala Blasters FC looking to salvage something out at least in the first leg. Something like FC Goa managed to do in the final matchup. Of course, the individual game is there, but Saransh on land, I'm telling you, he's a monster. जी हाँ, और उसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सारांश सिर्फ और सिर्फ लैन पे ही नहीं, वो अपने घर से भी जब खेल रहे थे, वो ऐसा एक मॉन्स्टर ही परफॉर्म कर रहे थे। बट हाँ, वो मॉन्स्टर कहने के हो जाता है, शायद विकसित हो जाता है और भी बड़े मॉन्स्टर पे। तो कुछ उस तरीके का जो सिनेरियो है वो हम लोग को इधर देखने के लिए मिलेगा। तो देखते हैं लाइक कैसा आउटकम जो है वो निकल के आता है इस कोऑप गेम से, और क्या नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जो है वो 2-0 से अभी के लिए ये लेग नंबर 1 जो है वो अपने पास लेके जा पाते हैं कि नहीं, क्योंकि उनके पास एक बहुत ही अच्छा चांस है कि वो ये लेग नंबर 1 जो है वो 2-0 के साथ अपने नाम
कर ले। बट हाँ, और कुछ ही मोमेंट बाकी है जिसके बाद हम लोग को वो क्लैश देखने के लिए मिलेगा, और अभी सब कुछ इस को-ऑप गेम और शुभम के हाथों में है, ये लेग नंबर 1 के लिए एटलीस्ट। All right, some final pointers before they head into the co-op matchup. Northeast United FC will really be fancying their chances because they've been the stronger unit so far. But Kerala Blasters FC, they've surprised everybody. They've won a lot of hearts. And can they do that tonight again when it matters the most? You know, they have crunched their way into the semi-finals, but can they make it to the grand finals? Shubham has already been quite audacious, saying that he's got 6 matches to lift that trophy, and he's going to stop at nothing at all. And you can still see the atmosphere. It's not like, you know, they're feeling tensed or they're feeling under pressure, right? And looking at Shubham, you know, feels like he's got something under his sleeve. He's come up with a game plan to deal against Northeast United FC. And in just the next few moments, we'll have this match beginning. But I will take this moment in asking you guys, do you think KBFC can pull a surprise over here? Can they best Northeast United FC in the co-op match? And again, for all the new viewers that have recently tuned into the stream, this time the semi-finals are going to be divided into 2 legs. This is the first leg that we're having. The second leg will happen tomorrow. And whoever gets to win the first 4 games in a particular matchup, they head to the grand finals. Now, what has happened in the previous fixture? It's a 2-1 scoreline that's going on, with Bengaluru FC having that slight lead. But tomorrow, anything could possibly happen. We've had our discussions about that. But TT, coming into this co-op matchup, what do you think that Lokmanyu and Shubham need to do in order to break through the Highlanders? देखिए, ये सेम आंसर मैं देना चाहूँगा एक बार फिर से कि मुझे नहीं पता, क्योंकि जब सारांश एंड उनके सामने लाइक उनके साथ इधर इमाद आ जाएँगे, देन उनको रोकना बहुत टफ है। बट हाँ, एक बार गेम के अंदर जंप इन करने के बाद पता चलेगा कि दोनों का जो यानी कि लाइक मेंटालिटी है, वो किस तरीके से है, लाइक किस तरीके से वो दोनों गेम्स को ले रहे हैं। बट हाँ, आप वो क्यूब के बारे में बात कर रहे थे, वो हाथ में दिख रहे हैं इधर सारांश के, 2 लेके आए हैं। I think he's just borrowed Imad's Rubik's Cube, Yes. because you know what I can see is he's also one of those players who knows how to fix it. Is this some secret mantra that they've been doing? You know, just to improve your focus, your concentration, or whatever it is. You know, because so far it's been working out. At least for Imad, it did. You know, he's managed to clutch it out against Lokmanyu, who's had so many variations in his style of play in the first game. This is a Lokmanyu that I honestly have not seen for a long time. I mean, I've seen Lokmanyu in his prime. I've seen him win. But this one, this is the Lokmanyu that you would want to see from day one of your league stage campaign. But better late than never. He's shown up, but just a little shy because Imad managed to best him out. But what happens in the second game, nobody knows. But I for sure know that this is going to be close. ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा क्लोज जाता हुआ देखने के लिए मिल सकता है। बट वो एक बार गेम के अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। देखिए, एक्सपेक्टेशंस तो काफ़ी हाई है दोनों ही क्लब से। एक क्लब ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरते हुए दिखे हैं थ्रू द सीजन। ऑन द अदर हैंड, एक क्लब ऐसे हैं जो कि अभी एक्सपेक्टेशन बनाते हुए दिख रहे हैं कि वो कहीं न कहीं एक टाइम के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा पीछे थे, फिर उसके बाद कमबैक किए और अभी उनसे एक्सपेक्टेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। सो लेट्स सी लाइक क्या होता है और क्या आउटकम निकल के आएगा। Yeah, I mean, the outcome, whatever it comes out, one thing for sure, folks, is the entertainment, the masala, the drama. That's all going to be there for you. And just in a wee while, we will get ourselves into the game. The kickoff is going to be there, and we get to see whoever, or rather, which club kind of starts off really well. A little bit of adjustments being made, some final discussions, some final changes in tactics, and then we get to see this match beginning. You could see Imad, a huge sigh of relief for this lad the moment he scored that winner, and Lokmanyu was absolutely gutted. And there you go, the fist bump comes in, all 4 players, the game mode has been activated,
And there is the kickoff. Kerala Blasters FC from left to right in their black kit as the Highlanders are from the right to left with their white jerseys. नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लिए एक बहुत अच्छा चांस है कि वो इधर से इस गेम को जीते और 2-0 के साथ अपने पास लेके जाए ये लेग नंबर 1 को। बट ऑन द अदर हैंड केरला ब्लास्टर्स एफसी वो इतना इजीली बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। डिफ्लेक्शन आएगा, जाएगा साइडलाइन के बाहर एंड थ्रो इन मौका इधर मिलता हुआ केरला ब्लास्टर्स एफसी को। सो केरला ब्लास्टर्स एफसी की अगर बात किया जाए, यूजुअली लाइक उनके तरफ से काफ़ी अच्छा गेम जो है वो हम लोग को आज देखने के लिए मिला है और पिछला गेम वो जीत के अपना जगह बना लिए हैं इधर सेमीफाइनल के ऊपर। हो सकता है लाइक लोकमैन्यू पहला गेम हार चुके हो, लेकिन जो अटैक लाइक जो परफॉर्मेंस, जो गेम स्टाइल उन्होंने दिखाया है वो काफ़ी अच्छा था। बट इस बार बारी है कोऑप की और कोऑप पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत था केरला ब्लास्टर्स एफसी को। पिछला गेम जो है वो 4-1 से हारे थे मुंबई सिटी एफसी के सामने। तो इस बार नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड वो भी वन ऑफ द बेस्ट क्लब है अगर हम लोग बात करें इन कोऑप, देन हाँ सेकंड बेस्ट क्लब या फिर टॉप क्लब कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कोऑप गेम्स। बट इस बार केरला ब्लास्टर्स एफसी कुछ अलग ही, ओह माय गॉड, एक गलत पास था, बीच से अगर मिल जाता है इधर जर्सी के लोग को वो बिल्कुल नहीं छोड़ते। Yeah, I think this has been one of the prolonging problems, TT, that we faced with Kerala Blasters FC, right? They need to tune in on the same note. That has been one of those issues against Mumbai City FC. We also saw that happening. I really hope they fixed it, but just like that, North East United were looking quite deadly, but seems like the attack has been dealt with. अटैक फिलहाल के लिए रिजॉल्व होता हुआ दिखाया, बट ऑन द अदर हैंड कोशिश यही चल रहा है कि वो एकदम साइंस से बिल्डअप शुरू करे। एज नाउ लाइक थोड़े बहुत बहुत पोजीशनिंग जो है वो अपने पास आने की कोशिश। देखिए अभी तक मैंने जितना गेम देखा है लाइक थ्रू आउट द लाइक अगर वो चाहे नॉकआउट्स हो या फिर या सेमीफाइनल का पहला गेम फ्रॉम साइड ऑफ लोकमैन्यू, उनका अभी एक ही मंत्र है कि वो इधर बॉल कंट्रोल करेंगे, अपने पास रखेंगे, जब जब मौका मिलेगा जिधर जिधर से गैप निकलेगा उधर से हम अटैक बनाएंगे। तो कुछ उस तरीके का सिनेरियो है और जब नहीं मिल रहा मौका, जब गैप नहीं मिल रहा देन हम लोग इधर लॉब पास रो पास पे जाएंगे। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इधर हम लोग को नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की तरफ से शायद उनको पता चल चुका है। तो इसी वजह से अगर आप बॉल रखने नहीं देंगे, ज़्यादातर बॉल आप अपने पास रख रहे हो, केरला ब्लास्टर्स एफसी का गेम प्लान उधर ही जाके उसी जगह पे जाके कहने के आप ब्रेक कर सकते हो और वो हम लोगों को पिछली बार सेकंड हाफ पे करते हुए दिखे थे इमाद। तो क्या एक बार फिर से दिखेगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड? देखिए मिडफील्ड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बॉल होल्ड करा जा रहा है विथ लियोनेल मेसी, वी नो लाइक किस तरीके से आप अपना गेम जो है वो बिल्ड कर सकते हो एंड मिडफील्ड पे स्पेशली मेसी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये मिस पासेस आपके लिए भारी पड़ सकते हैं और ये पहली बार के लिए नहीं, ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की तरफ से शायद तीसरा या चौथा बार था आज के इस कोऑप गेम के ऊपर कि वो मिस पास कर रहे हैं, वो भी बहुत क्रूशियल पोजीशन पे। And so far how the game has been looking is that North East United FC, there've been few passes that have gone astray, but still they're maintaining majority of the possession. And Kerala Blasters FC, I think defense is one of those areas that they need to really work on in terms of their co-op. I think one of the reasons why they fell short against Mumbai City FC. Oh, that was nice intervention being made over there. That scorpion kick comes in, but now that Kerala Blasters FC have got some possession, they'll have to make something out of this, right? With Jude Bellingham passing it on towards Ronaldinho. Now makes that run with Hakimi, looks for that pass. That's more like it. And now with Mbappe, he takes the shot, but miles afar from the goal post. कोशिश तो किया जा रहा है पूरा, लेकिन देखिए उस कोशिश का कुछ आउटकम अभी के लिए तो नहीं आया। बट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड वो एक बार फिर से बिल्डअप पे पहुंच चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड हालांकि लाइक वो बिल्डअप तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक शॉट ऑन टारगेट कुछ खास देखने के लिए मिला नहीं है, तो वो ज़रूरी है कि वो एटलीस्ट फिनिश कर पाए। इस बार मौका है, रोनाल्डो बॉल लेके होल्ड कर रहे थे ताकि इधर ऑटोमेटिकली लाइक डिफेंडर कभी कभार क्या होता है कि मोमेंटम में हट जाते हैं एक जगह पे अगर आप होल्ड करते हो तो, लेकिन वो समझ चुके थे केरला ब्लास्टर्स, तो वो ज़्यादा प्रेशर पे ज़्यादा पेस से वो आगे नहीं गए, जिसकी वजह से वो
करारा तरीके से डिफेंड करते हुए दिखे, लेकिन इस बार काउंटर पे केरला ब्लास्टर एफसी, लोकमेन्यू एंड शुभम दोनों ही कोशिश उनकी तरफ से यही है कि वो पहला गोल दाग दे, लेकिन ये फर्स्ट हाफ कहने के कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के हाथ में था पोजीशनिंग के मामले में, बट अटैक के मामले में अगर देखा जाए केरला ब्लास्टर एफसी मुझे बेटर लगा। Yeah, I think Kerala Blasters FC, they've worked, they fine-tuned their attack for sure, looking a lot more organized. And at this point, Northeast United FC, like I said right before the commencement of this match, I feel like Kerala Blasters FC can edge it out in this match. So far, 40 minutes have passed in, and we haven't seen the deadlock being broken. But anything can possibly happen over here. It's been such a long roller coaster of a journey for these lads, and it's going to be gutting if they lose the co-op match also. And then so much pressure sort of surmount Shubham, and then he's got to face Saransh then, and then he would not fancy his chances. But a win in the co-op could give him that boost, just give him that push that Shubham needs, and if he kind of channels his inner demon, then might be enough to face off against Saransh, but no. Again, another promising chance squandered. 45 मिनट्स ऑलरेडी हो चुका है और आई थिंक लाइक आखिरी कुछ सेकंड्स बचा हुआ है, हालांकि लाइक टाइम तो रुक ही चुका है, कोई एडेड टाइम नहीं है और ये आखिरी चांस होने वाला है केरला ब्लास्टर एफसी की तरफ से टुवर्ड्स एम्बापे। क्या ये आखिरी चांस पे वो गोल स्कोर कर पाएंगे? अभी भी मौका था बट नहीं, कितने देर तक अलाउ करेंगे? इधर एआई रेफरी वो बोल रहे हैं इट्स एनफ। तो फर्स्ट हाफ इधर खत्म होता हुआ और स्कोर लाइन अभी भी 0-0, सो केरला ब्लास्टर एफसी के पास अभी भी मौका है कि वो इधर से गोल स्कोर करे और जीत के जाए एंड कम बैक करे इस पूरे मैच के अंदर। Am I anticipating a cross coming in from Imad? Is that what Sharan signaled? I mean, I'm just kind of hoping if I could get one of those pro players who are sitting and watching the match in the lobby, get along with us on the desk, and just try to decipher what these body languages are, what do they intend. But yes, I think so far, I mean, I'm pretty happy with how Kerala Blasters FC has performed in the first half, and Northeast United FC, some serious discussions going on. What needs to be done over here? Saransh is like, bro, you just need to make the right pass. Give it to me. I'll make sure I convert into gold. So at this point, Saransh is starting to feel himself getting into the groove, and Imad, and he's risen up to his occasion, right? When it mattered, Imad scored that winner goal. But in the co-op, he also, needs to dance along with him. Tangoing on the same song. They need to figure a way to find a goal against Kerala Blasters FC. बट देखिए अभी कहने की केरला ब्लास्टर एफसी लाइक पहले गेम कंट्रोल के बाहर जाने के बाद, लाइक फर्स्ट गेम हारने के बाद अब उनके लिए बाय एनी हाउ जरूरत है कि इस टीम को जीते, नहीं तो फिर कल के लिए प्रेशर बढ़ जाएगा, लेट 2 पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। तो कोशिश यही रहेगा, लेकिन इस बार क्या ये पहला गोल हो सकता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ से? लुशियो छीन के लेके गए बॉल, बेहतरीन पोजीशन था और बेहतर डिफेंस आज हम लोगों को थ्रू आउट द गेम, नॉट ओनली दिस गेम, पिछले गेम पे भी देखने के लिए मिला था और उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। डिफेंस काफ़ी अच्छा है और कॉप के मामले में जो हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन इनके डिफेंस को थोड़ा और बेटर करने की ज़रूरत है, वो तो किए हैं, देख के लग रहा है वो किया गया है। बट ऑन द अदर हैंड नो यूनाइटेड की अगर बात किया जाए, उनकी तरफ से भी आज कहने की थोड़ी बहुत गलतियाँ हम लोग को नजर आता हुआ, जो कि यूजुअली पहले होता नहीं था, बट आज लैंड के प्रेशर में हो रहा है या फिर लाइक क्या सिचुएशन है वी डोंट नो, बट हाँ मिस पासिस कहने के बहुत सारा दिख रहा है। तो ये मिस पासिस अगर जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक उनका जो मेन बिल्डअप है जो वो कोशिश करे वो मौका नहीं मिलेगा। कोशिश पर वैंडे साथ एडवांस कराया गया उनको, जिसके वजह से उस पूरे चांस को इधर डिनाई कर दिया गया। Yeah, this is, I think, what Saransh said, right? You need to try and start giving crosses to me. Feed me the ball and I'll try to score it. This was the first attempt. I think this is where, I guess, they figured out Kerala Blasters FC, what Northeast United FC are up to. But again, ever since the second half has begun, we could see that Northeast United FC are keeping a lot of possession. They're working things around in those midfields. One more driven through pass comes through.
This time towards R9, needs to look for that cutback, gets it with Ronaldinho. Can he shoot? Yes, does, Oh, but unfortunately, Van der Sar lays his arms out wide and out it goes for a corner. जी हाँ, इस बार एक बार फिर से शॉर्ट कॉर्नर लिया जाएगा। टुवर्ड्स माल्डिनी बहुत दूर थे बट अभी भी बॉल है नॉर्थ यूनाइटेड के पास। टुवर्ड्स वर्जिल वैन डाइक का देखिए प्रॉपर्ली कहने की बॉल अपने पास रख रहे हैं, वो चाहे कुछ भी हो जाए, थोड़ा पीछे लाइक बैक पास खिलाने में ज़्यादा सोच नहीं रहे, लेकिन कहने की जो है वो कोशिश है कि वो एक गैप मिले, वो गैप ही नहीं मिल पा रहा। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड आज वो समझ नहीं पा रही कि वो गैप ढूंढेंगे तो ढूंढेंगे कैसे, क्योंकि अभी तक वैसा कोई ऑन पॉइंट शॉट आया ही नहीं है जिससे कि वो टेस्ट कर पाए इधर केरला ब्लास्टर के गोलकीपर को एज ऑफ नाउ इस को-ऑफ गेम के ऊपर। एंड सेम विद केरला ब्लास्टर एफसी एज वेल। लाइक फिर भी इनके लिए मैं तो एक डब्ल्यू कहूंगा इस पूरे सिनेरियो को, जब तक कि वो गोल्स कंसीड नहीं करते, क्योंकि अभी तक जिस तरीके का उनका गोल सिनेरियो तो है, बट देखिए उसके बीच में बॉल छीन लिया गया था। क्या ये गोल होगा? बॉल अभी भी केरला ब्लास्टर एफसी के पास। उली टुवर्ड्स रोनाल्डिनियो कोशिश था ड्रिबल करके अंदर जाने की, बट रोनाल्डिनियो को इधर डिपेंड करते हुए दिखे लियोनेल मेसी। ओ माय गॉड, लाइक जरूरत था, काम कर गए, बट अभी तक देखिए मैं तो कहूंगा कि केरला ब्लास्टर की तरफ से काफी अच्छा गेम रहा है। Yeah, I think Kerala Blaster FC have done a pretty nice job in holding Northeast United FC at bay. But at this point, what awaits them? Lionel Messi has come in and he looks for that ball roll. Oh, beautiful shot! Wow! Wow! I did not see that coming. I literally did not anticipate him to do such a thing. And feels like it's an Imad goal and something that Imad can only pull off. Just when you would wonder, just when you would expect, when you're doing a ball roll, somebody is going to go for a pass maybe. But no, Imad takes a shot and Kerala Blasters FC, they held on for so long, but finally seems like their fortress has fallen. एक मैजिकल कार्ड को अगर आप एक मैजिकल मैन के हाथ पे दे दोगे तो कुछ इस तरीके का ही आउटकम आएगा। सो कहीं न कहीं गोल हो चुका है और उसी के साथ-साथ 1-0 लीड, और जिस टाइम पे आया है केरला ब्लास्टर्स के लिए देखिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि केरला ब्लास्टर्स ऐसे ही लाइक अभी तक हम लोग कह रहे थे या लाइक ये एक उनके लिए डब्ल्यू था, क्योंकि तब तक वो गोल कंसीड नहीं किए थे। और ऐसा टॉप क्लब लाइक जिस तरीके से उनका फॉर्म रहा है, जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है, वो 1 दिन में 1 सेकंड में जो है वो बदल नहीं सकता। तो वो फॉर्म को बेहतर करने के लिए आपको टाइम चाहिए, जो कि प्रॉपर्ली उनको मिला था। उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करके दिखाए हैं। एटलीस्ट ये कह सकते हैं कि पिछले को-ऑप से तो काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस इस को-ऑप के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिला है उनके तरफ से। लेकिन फिर भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड बैक टू बैक अटैक्स करते गए और उसके बाद उनको अपना आउटकम मिला। लेकिन अभी भी टाइम बाकी है और शुभम मौजूद है। शुभम कुछ भी कर सकते हैं, एंड नॉट ओनली शुभम, इधर लोकमेन्यू की भी अगर बात किया जाए, वो भी कहीं न कहीं कुछ ना कुछ जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स लेके आ सकते हैं। उनके पास प्लान बी, प्लान सी रेडी रहता है। बट क्या वो इधर गोल कर पाएँगे? क्योंकि अभी तक तो गोल करने के मूड पे नहीं, गोल बचाने के मूड में थे, और अभी गोल बचा के फ़ायदा नहीं है, गोल उनको करना होगा। Yeah, 15 minutes remain. And what a nice run it was, right? When you see Lionel Messi getting in defense and suddenly he goes on attack and then he was out to score. Kind of thoughts into thinking, how deep have Northeast United FC had to go to try and carve out a single goal? Now they are on board the momentum train with Erling Haaland unable to chest the ball. But this sort of exposes Kerala Blasters FC. A beautiful counter-attacking run. And now what can they pull off? Goes in for a header. Was green timed, but was screened by the player. And the attack gets foiled. This is going to be gut-wrenching if you are a KBFC supporter right now. They got in ever so close. Still, looking quite determined. Still wanting to fancy their chances. Nice space found through with Ashraf Hakimi, and now with Ruud Gullit wanting to go from the center. Decides, he was looking forward for Kylian Mbappe, but little short there. As a result, Northeast United FC have just taken over. Now this could be where they want to punish
KBFC for one last time and put them to sleep. देखिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंगली परफॉर्म किया जा रहा है। एकदम राइट साइड पे उनको पता था कि अगर इधर कोई भी यानी कि इंटरसेप्शन आता है तो वो इधर थ्रो मिलेगा और वो मिलेगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को ही। तो प्रॉपरली माइंड गेम इधर करते हुए दिखा रहे हैं और कोच की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शंस इधर आते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं और वो इंस्ट्रक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन अ, और दोनों ही इधर एक दूसरे की तरफ देख के जो एक्सप्रेशन दे रहे हैं मुझे लग रहा है कुछ कुछ तो चल रहा है, कुछ तो इंटरेस्टिंग हम लोग को शायद देखने के लिए मिलेगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग देखें शिवम एंड लोकमैन वो भी डिस्कशन इधर करते हुए थोड़ा टेंस्ड है क्योंकि उनको पता है कि अगर ये गेम इसी स्कोर लाइन के साथ खत्म हुआ देन ये फर्स्ट लेग उनके हाथ से निकल जाएगा और देन सेकंड लेग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर उनके ऊपर बनने वाला है। हालाँकि वो अभी तक कमबैक करते हुए आ रहे हैं, क्लच करते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हर बार आपके ऊपर प्रेशर आ जाए, तो कितना ही आप प्रेशर हैंडल करोगे? तो कोशिश ये कि 6 मिनट के अंदर एटलीस्ट वो ये गोल स्कोर कर दें। I mean, of course, he would try and do that, but you could see how desperate KBFC are for the ball over here. And final few attacks remaining, at least, I mean, at the very max, this could be the last potential attack for KBFC. And they will have to take their time in building this one up. They will have to try and score an equalizer, not like that when Northeast United FC steal the ball away in broad daylight. And again, I think KBFC have done a really good job getting the possession back. But no, Rude Hullet has been such a force there in the midfield, right? Especially when you have him, you know you can easily go for those tackles, you can try to get those steals, and he'll do that with so much ease. Just when I thought, right, with Bellingham, he could have gone in and tried to take a shot. He goes a little out. And now pass on towards Kylian Mbappe and looking for another man. Does not happen. But I think the job has already been done for Northeast United FC as they managed to seal the deal in the co-op matchup with just that one goal differentiating against Kerala Blasters FC. फाइनली वो एक टेंस्ड मुकाबला वो खत्म होता हुआ दिखा और कोऑप के अंदर भी इधर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड लाइक विन निकालते हुए देखने के लिए मिले। सो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड नाउ 2-0 से आगे और ये आखिरी गेम सारांश एंड शुभम एक दूसरे के खिलाफ जाने वाले हैं। सारांश अगर ये गेम निकाल लेते हैं देन कहीं न कहीं हम लोग कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को सिर्फ एक गेम चाहिए होगा उनके लीग 2 पे और वो इधर क्वालीफाई कर सकते हैं फॉर द फाइनल्स के ऊपर। सो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग माहौल इधर बनता हुआ जा रहा है और ये माहौल और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तब हो जाएगा अगर शुभम इधर से क्रॉस कर देते हैं और 2 ऑन का सिनेरियो रहते हैं जैसे कि हम लोग को एफसी गोवा बैंगलोर एफसी के बीच में देखने के लिए मिला था। तो लेट्स सी इधर क्या आउटकम निकल के आता है इसके बाद और किस तरीके से दोनों एक दूसरे के खिलाफ अप्रोच करते हैं। बट हाँ, कुछ इस तरीके से था आज का सिनेरियो, आज का स्कोरबोर्ड सेमीफाइनल 2 लेग 1 शुरुआत हुआ लोकमान्यु इमाद के बीच में 2-1 से इमाद जीते देन ये कहने के कोऑप 0 तो उतना लाइक गोल जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, लेकिन गेम बहुत मज़ेदार हो रहा है। Yeah, I think it's been quite end to end, to be honest, right? And Kerala Blasters FC, huge props to them, especially how they've improved over the course of time. But again, those little plays that Northeast United FC thing to pull off, especially the goal that they scored with Lionel Messi just going in with that ball roll scoop. Again, this is such a typical Imad goal, right? Did the same thing, just switched his legs and took a shot. And then, you know, it felt like Kerala Blasters FC. What could you do as a club over there? How do you deal against a player who's got such an individual prowess over you? And it was just too much for them to handle. But right now, it comes down to the final game where Shubham has to win, get a win at least to have a fighting chance tomorrow. Because if KBFC lose this one also, the next game that Northeast United FC win, that is going to secure them their spot in the grand finals. ऑफ देखिए लाइक मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ लाइक ये आखिरी गेम के लिए। देखिए आखिरी गेम जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहने की होता हुआ देखने के लिए मिलेगा और देखिए मेन चीज़ इंटरेस्टिंग इसीलिए मैं कह रहा हूँ
2-0 हो चुका है। अगर ये नॉर्मल कोई अलग गेम की तरह होता तो हम कह सकते थे कि हाँ, ठीक है लाइक गेम खत्म हो चुका है। लेकिन नहीं, इधर 2 लेग्स हैं। ये लेग नंबर 1 है, लेग नंबर 2 हम लोग को कल देखने के लिए मिलेगा। अगर इधर से शुभम निकाल के लेके जा पाते हैं इस गेम को, एंड आई थिंक मुझे लगता है कि उनके पास एक अच्छा खासा चांस रहेगा कि आज वो वापसी जाएँगे अपने होटल पे, थोड़ा बैठेंगे एंड शांति से वो डिस्कस करेंगे कि कल क्या करना है। कल जो भी करना है वो आज प्लानिंग कर सकते हैं और कल के दिन पे आके क्लच कर सकते हैं। और कल उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ लाइक 3 गेम चाहिए होगा। सिर्फ़ नहीं पर हाँ, 3 गेम के लिए भी उनके पास चांस रहेगा। सो लेट्स सी लाइक क्या होता है और आपको क्या लगता है लाइक फिक्सेस आप तो तब से मेरा प्रेडिक्शन जान रहे थे। तो अभी आपका प्रेडिक्शन दीजिए लाइक ये लास्ट गेम पे क्या होने वाला है? It's still not, if you're Shubham at this point, it's kind of quite gutting, right? Of what's going on, what you're gonna do, because Northeast United FC somehow have always managed to edge past KBFC over here. And no matter what KBFC are putting on the board, they've been relentlessly tryharding. But yeah, heart somewhere says that you would want Shubham to win. You would want them to have another striking chance to fight tomorrow. But if you look at the circumstances right now, Saransh is a lot of levels up. जी हाँ, ये तो मानना ही होगा, इस पे कोई डाउट नहीं है। लाइक सारांश जैन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तब वो एक्सपीरियंस आता है, वो स्किल्स आता है और ऐसा भी नहीं है कि लाइक वो अपने गेम के अंदर बहुत कुछ एवोल्यूशन लेके आ गए हों। वो करते हैं नॉर्मली लाइक देख के लगता है, हाँ, ये तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन जिस जगह पे जो करते हैं, वो शायद सब लोग नहीं कर सकते। और यही होता है एक्सपीरियंस, यही होता है स्किल्स और यही होता है हुनर, जो कि उनकी तरफ से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो अभी मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा क्लोज़ गेम क्योंकि लाइक शुभम की तरफ से अगर देखा जाए, शुभम कहीं न कहीं अभी तक का कुछ सरप्राइज़ेज़ देते हुए आए हैं और वो जो बिग बिग प्लेयर्स हम लोग काइंड ऑफ कह सकते हैं जिनका फॉर्मेशन या फॉर्म बहुत अच्छा रहा है। लाइक फॉर्मेशन तो दूर की बात है, लाइक वो तो इन गेम हो गया। बट फॉर्म हो गया, फिर लेगेसी हो गया, जो अपना एक लेगेसी मेंटेन करते हैं। उनके खिलाफ जाके कहीं न कहीं शिवम कहीं न कहीं कुछ वंडर करके देके जाते हैं। तो क्या एक बार फिर से वो कुछ हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा? वैसा ही कुछ सिनेरियो क्या देखने के लिए मिलेगा हमको ये गेम के अंदर, वो देखने के लिए मैं रेडी हूँ एंड आई थिंक जितने भी केरला ब्लास्टर्स एफसी के फैन हैं, उनको भी पता है कि क्यों हम लोग इतना ज़्यादा लाइक बात कर रहे हैं शुभम को लेके क्योंकि शायद उनके उन दिनों में जब उतना खास पॉइंट्स उनको मिल नहीं रहा था, उस टाइम पे अगर कोई प्लेयर को देख के वो खुश हो रहे थे, वो सिर्फ शुभम ही थे। Yeah, I think it's rightful to say that he's been their messiah. Has saved him, have saved the club on various occasions. But this is as close he gets to taste glory, right? He is flying too close to the sun, and right in front of him, he's got Saransh, a fortress. A lot of players have tried to best him out in the LAN events in the Indian circuit, but we know he's a defending champion, and he still has his eyes set on that trophy and that medal and that FGS slot that awaits him, and he's gonna stop at nothing at all. And there we have the kickoff, Kerala Blasters FC from left to right in their black kits, and on the right we've got Northeast United FC from right to left. Let's see what can Shubham pull out, or is it gonna be Saransh who becomes the ultimate king? सारांश की अगर बात करें तो वो राइट टू लेफ्ट अभी फिलहाल के लिए अटैक करते हुए दिखेंगे विथ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड लेफ्ट टू राइट इधर केरला ब्लास्टर एफसी शुभम अमतम यानी कि वो यही टीम पे डांस कराते हैं लेकिन 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 सारांश आज उनके प्लानिंग कुछ अलग है शुरू किए हैं गोल के साथ और जो लीड यानी कि उनको मिला था ओवरऑल 2 गेम का उसको वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं और तीसरा गेम लेना चाहते हैं लेकिन देखिए ये प्रेडिक्शन करना बहुत जल्दबाजी हो जाएगा बट फिर भी पहले ही 6 मिनट के अंदर सॉरी फॉर दैट लाइक पहले 6 मिनट के अंदर अगर गोल स्कोर कर देते हैं कोई क्लब एंड वो सारा का सारा प्रेशर आ जाता है ओपोनेंट के ऊपर जिधर ऑलरेडी केरला ब्लास्टर्स की
2 गेम हार चुके हैं और इस गेम का शुरुआत जो है वो एक गोल के साथ कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। आई डोंट नो लाइक शुभम के माइंड पे क्या चल रहा होगा, लेकिन भाई एनी हाउ उनको इधर से कमबैक करना होगा। And he's on his warpath with R9. Nice elastico there, but could not produce anything out of that attack. And this is where I say, right, Saransh, once he gets on land, this is how deadly he becomes. A beautiful lob through pass comes in with Theo Hernandez. Needs to cut through. Looking for a cutback. Yes, goes on towards Rudhulit with Lionel Messi. Passing it back towards Jude Bellingham. Now, big set of passes. We know Saransh loves the build-up. He loves trying to play with his opponent. Wow! That elastico there almost had gotten through the final defense there. But unfortunately, he could not find more out of that attack. But thankfully, Shubham was alert. He's managed to see it through. Somehow, he's now back. So it's an end-to-end FIFA that's going on. We're not seeing these players keeping a lot of the ball on that midfield, rather just going after each other. I feel like, this could be a high-scoring game from either of the sides, but for now, Saransh is back on his attack. Let's see what can he pull off. शुरुआती 18 मिनट का गेम अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं शुभम की तरफ से भी काफ़ी अच्छे अटैक का बिल्ड होते हुए दिखे थे, लेकिन पोजीशन के मामले में इधर सारांश बहुत ज़्यादा आगे। पर देखिए, इस बार कोशिश था कि वो एकदम लेफ्ट पे थियो को बॉल खिलाए, लेकिन बीच से इंटरसेप्शन आया और नो, ये कहीं न कहीं थोड़ा लेट हो गए, पर अभी भी मौका है और लेंगे ऑफसाइड। Yeah, I could figure that, that run was triggered just a little earlier. And even a point 30 seconds later, had it gone, maybe things would have been different. But regardless, Saransh has been looking to be in good control over in the first half. It's not like Shubham is just backing off or bowing down to him. He's also fighting back. But then again, Saransh has got such nice tempo going through in this game. Now, this is a good run, triggered, but not a lot of passing options. And I think Saransh read that pretty well. हाँ, बहुत ही ध्यान से फॉलो कर रहे थे अभी तक कहीं न कहीं गेम्स। और सारांश की अगर बात करें, वो सिर्फ और सिर्फ एक बेहतरीन प्लेयर ही नहीं है, वो बेहतरीन ऑब्जर्वर भी है। लाइक जिस तरीके से वो ऑब्जर्व करते हैं ओपोनेंट्स को, वो काफ़ी शानदार। इतना क्लोज पहुंच जाने के बाद अगर आपका वो गोल जाता नहीं है ना, तो वो कहीं न कहीं बहुत बुरा लगता है। बट हाँ, फाइनली लीग का शुभम के लिए सिनेरियोज अच्छे गए और शुभम के चेहरे पे वो हंसी कहने का आपको हमेशा देखने के लिए मिलेगा। वो चाहे हार रहे हो या फिर जीत रहे हो, वो पॉजिटिव मेंटलिटी के साथ रहते हैं और उनको पता है, देखिए आज ही सब कुछ खत्म नहीं है, तो अगर वो इधर से एक कमबैक भी कर पाते हैं, वो भी उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। Yeah, I mean, this is where I would urge the Kerala Blasters FC fans to kind of show all your support to these two lads because they need it. Because right now, what we are seeing, they're on the cusps of defeat. And tomorrow, they have that one shot and they have to hit bullseye every single time. Cannot afford to drop a game if Saransh wins this one out, and it gets even more tougher. But right now, nice build-up play, a beautiful cutback, a pass at the right time, enables Kerala Blasters FC to even the scores. It's one each apiece, and now Saransh, he's been wounded. He's figured that what his opponent is trying to do, but Shubham, he's got to capitalize, he's got to ride on this and try and score one more goal. यहाँ पहले ही 33 मिनट के अंदर दोनों ही क्लब के तरफ से एक-एक करके गोल आ चुका है। शुरुआत 6 मिनट के अंदर गोल हुआ था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की तरफ से, लेकिन उसके बाद शुभम भी बैक टू बैक अटैक करते रहे और 33rd मिनट पे उनको उनका सफलता मिला। बट क्या सारांश ज़्यादा देर के लिए उनको खुश रहने देंगे? नहीं, नहीं देंगे उनको खुश रहने, और दूसरा दागने वाले हैं बैक ऑफ द नेट। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड 2-1। कुछ सेकंड्स की वो खुशी थी जो केरला ब्लास्टर्स को मिला था, लेकिन उसके बाद सारांश कह रहे हैं हे ब्रो आई एम हियर, और सेकंड गोल आ गया। तो पिक्चर्स मुझे लग रहा है कि इधर सारांश यानी कि उनको जितना ज़रूरत है उतना ही गोल करना चाह रहे हैं, शायद वो उतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं खेल रहे।
Yeah, I think Saransh, is looking so poised, right? Look at him, his body language, so calm. You don't see him under pressure. You don't see that tension browing over his head. But on the other side, Shubham, he's feeling it, right? When especially, why would he not? When he's already 2 matches down and the entire burden is resting on your shoulders. Sometimes it feels too heavy, one after the other. This is where Saransh is going to walk through, and Shubham, I guess he kind of graciously accepts defeat, has removed his headphone, wants to chill down a bit and take some tips from Lokmanyu because he needs it. देखिए इसके पहले भी एक प्लेयर थे जिन्होंने अपना हेडफोन उतारा था, फिर उसके बाद कुछ अलग ही करके चले गए थे। तो क्या एक बार फिर से हम लोगों को शुभम के तरफ से ऐसा कुछ देखने के लिए मिलेगा? हेडफोन्स तो उतर चुके हैं, बट क्या गोल्स अभी उतरने वाले हैं? क्या वो गोल्स उतार पाएंगे बैक ऑफ द नेट? लेट्स सी। फिलहाल के लिए एक बार फिर से बिल्डअप, वर्जिल वैन डाइक टू बेलिंगम टू मेसी टू रोनाल्डो, और इस बार रुडली काफी अच्छा वन लाइक पासेस जो है वो देखने के लिए मिल रहा था। टिकी टाका की कोशिश था, लेकिन वो ज्यादा देर तक एक्यूरेट नहीं रह पाया। फर्स्ट हाफ का गेम कहीं ना कहीं कह सकते हैं दोनों ही क्लब की तरफ से काफी अच्छा खेला गया। हो सकता है कि गोल्स के मामले में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड आगे हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अटैक, इन टर्म्स ऑफ पोजीशनिंग अगर देखा जाए तो वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा बेहतरीन देखने के लिए मिला है दोनों ही क्लब की तरफ से। बट आई थिंक इधर डिफेंस के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है केरला ब्लास्टर्स को। Really important at this point because now Kerala Blasters FC feeling the entire heat. It's burning down for them. Need to find a way where they could remedy the hemorrhage because at this point, Shubham, he's got to find his way, and only a miracle can save KBFC because Saransh Jain, he's been so flawless. Look at how smoothly he's been passing through, and every single time he goes out for an attack, he's got an idea, he's got a picture painted right in his brains what he needs to do, and feels like sometimes Shubham would be wondering, why did I score this one? Because right after, in quick succession, he conceded 2. यहाँ जिसकी वजह से कहने की स्कोर लाइन जो 1-0 था वो भी फिलहाल के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की तरफ से, लेकिन उसके बाद शुभम भी बैक टू बैक अटैक करते रहे और 33rd यानी कि काफी बेहतरीन आउटकम हम लोगों को निकल के आता हुआ देखने के लिए मिला इस पूरे थ्रू आउट द हाफ के अंदर। बट ये सेकेंड हाफ आई थिंक शुभम के लिए एक एग्जाम है, लाइक उनको इधर पास करना है, अगर नहीं करेंगे देन उनको कहने के पूरे 1 साल का वेट एक बार फिर से करना पड़ सकता है इसी एग्जाम के लिए, क्योंकि देखिए बैक टू बैक 3 गेम्स जितना वो बहुत टफ है, तो इधर से एटलीस्ट एक को लेके जाना होगा। बट ओह माय गॉड, शुरू हुआ सेकंड हाफ और झटके में गोल कर दिए 4-1। This is quite dementing. This is, I can't see this anymore. Faint hearts can't take it. Saransh, please stop it. He's gone on a merry ride right now. You're aboard the Saransh Jain train. Embrace yourself for a few more goals coming. Of course, Shubham wants to salvage, but look at that. The power on the ball, not there. And this is a moment you kind of you have tried so much, but your switches kind of flip off. But still, Shubham trying to keep himself in the game. Has managed to score one more, but कहावत है, दिल्ली काफी दूर है. It seems like that's the case for Shubham. He needs to score 2 more goals, not just 2. It's not going to settle. It's not going to be, turning out well with just a draw. You go to OT, then you would want to win this one, and for that to happen, he needs to stop conceding and start scoring, and 3 more is what's needed at this point. As of now 3 गोल स्कोर करना, आई नो कि ये बहुत टफ है, लेकिन फिर भी शुभम की तरफ से एक पॉजिटिव वाइब कहने के आ रहा है, जिस तरीके से वो इधर बिल्डअप पे जा रहे हैं। देखिए वो अगर टर्न कर जाते हकीमी, देन शायद एक पास एंड एम्बापे को देते तो कामयाब हो सकते थे, लेकिन इस बार सरांश जैन लेफ्ट विंग से विद रोनाल्डिनियो 95 रेटेड टीम ऑफ द ईयर आइकन कार्ड, जो कि मिलियंस में बिकता है क्लब में, लेकिन इधर मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। बट इस बार कहने की कोशिश था, गोल नहीं आया।
क्योंकि शुभम की तरफ से इस बार डिफेंस रेडी था। बट लेट्स सी क्या होता है, क्या काउंटर पे एक और गोल कर पाते हैं। एक गोल आ जाएगा एंड मैच ऑन हो जाएगा। एक गोल पे कहीं न कहीं पूरा मैच एक बार फिर से कहीं न कहीं एक मोमेंटम पे आ सकता है केरला ब्लास्टर्स के लिए। पहुँच चुके हैं, लेकिन वो शॉट जस्ट आने से पहले एक डिफ्लेक्शन लाइक वर्जिल वैन डाइक का काफ़ी बेहतरीन टच। And at this point, TT, it's inevitable. He needs to find that cutback. Sorry to cut you off, but TT, Shubham's defense kind of was all over the place tonight. And Saransh has been enjoying those openings. He's been given those chances where he's broken free. Now again, Shubham looking to salvage yet another one. Goes for a heel-to-heel, takes that shot, but no. The defense alert as ever. Does not let him pass. आखिरी देखिए कुछ ही मिनट का गेम बाकी है, सिर्फ 22 मिनट्स और कहने के ये 22 मिनट्स जस्ट सरांश को क्या करना है, उनको डिफेंस करना है और बॉल अपने पास रखना है। लेकिन क्या आज शुभम विद द शॉट एंड तीसरा गोल, एक गोल का डिफरेंस सिर्फ बचा हुआ है। हम देखे हैं आखिर के 10 मिनट के अंदर 3-3 गोल होते हुए, अभी तो उसका डबल टाइम बाकी है। क्या 2 गोल स्कोर कर पाएंगे इधर से शुभम, वो देखना होगा। 4-3 हो चुका है और काफी बेहतरीन ले पे दिख रहे हैं शुभम के अंदर से। लाइक वो जो सेकंड गोल था उससे ही एक पॉजिटिव वाइब आना चालू हो गया था। लाइक शुभम अभी ऑल आउट जा रहे हैं, उनको कोई डर नहीं है, मन के अंदर कुछ भी हो जाए देखा जाएगा। जस्ट जाते हैं, गोल स्कोर करने की कोशिश करते हैं और जिसकी वजह से 2 गोल हो भी गए। And this is where we were kind of wondering when will Shubham strike back, and seems like the Viper is slowly and surely doing it. And this is where I think Lokmanyu plays a very crucial role. It just keeps pushing him till the point he gets that equalizer. Then he can look for a winner. At least, at this point, getting an equalizer, then pushing it to overtime, then he could, just try and grasp that momentum and do some wonders. But yes, Saransh really needs to hold. And with the 20 minutes still to go, just that one goal separating KBFC and Northeast United FC, Shubham is starting to feel himself. 71st मिनट एंड अभी भी देखिए कहने के 19 मिनट का गेम बाकी। सरांश क्या वो इधर से गोल ढूंढ पाएंगे? नहीं, बेहतरीन डिफेंस शुभम के तरफ से। रोनाल्डो का रन 5 एट द बैक इधर खेलते हुए सरांश जैन, इसका फायदा उनको अभी तक कहने के मिल तो रहा था, लेकिन अचानक से जिस तरीके से 2 गोल स्कोर हुए उसके बाद लग रहा है कि इधर ये फॉर्मेशन को तोड़ने का, भेदने का जो एक फॉर्मूला है वो मिल चुका है शिवम को। वो उसके साथ इधर कहने के भेदते जा रहे हैं बैक टू बैक। एक बार फिर से वन टच के थ्रू कोशिश था, बट इस बार रेडी थे सरांश। Alright, now it's 3-4 scoreline. Saransh, he's feeling some pressure. He's starting to sweat. You could see Shubham has gone for that constant press, and PAPL has also been activated for him. You could see those players are coming for the ball. And no, this cannot go in. If this does, then things get over for Shubham. Still an offside, so he's got a dying chance. The final 10 minutes of the game, and suddenly a fresh gust of air has been blown into this matchup. With Jude Bellingham to Lionel Messi, needs to find some room. He's got his fullbacks up ahead with Ruud Gullit, wanted to perform a step over, wanted to beat through the defense, but seems like Saransh is so well prepared. आखिरी 8 मिनट का गेम बाकी है, सरांश को जस्ट बॉल होल्ड करना है। तो वही करते करते बॉल लेके बाहर चले गए थ्रो लाइन के, और उसी के साथ एक पॉज क्यों किया गया था बहुत पहले। चीज जो पॉज अभी होता हुआ दिखेगा, क्या क्या चेंजेस लेके आने वाले हैं वो देखना होगा। आई थिंक उनमें से एक हालैंड हो सकते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे ज़्यादातर हम लोगों को चेंजेस करते हुए दिखे थे पिछले बार। लाइक अगर हम लोग बात करें केरला ब्लास्टर एफसी की, सो शायद एक बार फिर से हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर कैप्डेविया आता हुआ देखने के लिए मिल जाए विथ हालैंड। मे बी पॉसिबिलिटीज है, नहीं भी हो सकता, बट लेट्स सी लाइक वो क्या क्या लाइक कौन कौन से फ्रेश लेग्स को इधर लेके आएंगे। बट ऑन द अदर हैंड सरांश, लाइक ये आखिरी कुछ मिनट के लिए उनको ज़रूरत है जस्ट कामली डिफेंड करो और एकदम एग्रेसिवली जाके गोल कर दो, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ आपको जो है वो बचा सकते हैं, और एल्स इधर
बहुत बहुत ज़्यादा चेंजेस करने के लिए कहा। इस बार यूज़ेबियो, ज़िनेडिन ज़िडान तो बहुत सारे लाइन देके चेंजेस जो है वो आ चुके हैं। शायद वो चेंजेस इसके लिए भी आए होंगे कि एक गोल अगर स्कोर कर गए तो एक्स्ट्रा टाइम पे जाके जो शुरुआत है वो अच्छा रहे। मे बी, लेट्स सी। Just merely 5 minutes remaining, and Kerala Blasters FC do not have a lot of attack, and this could be a huge sucker punch if Saransh manages to score out of this one. Will go for a roll, and now looks for that pass. KBFC, they're not giving them that much avenue, and this is what was required. Had Shubham done more of this in the first half, I don't think he would have been in this condition. I think the first half you could say was predominant by Lokmanyu, in fact by Saransh Jain, but Shubham, he's made a comeback in the second half. Nonetheless, he has had to fight his way through, but I guess that's where it ends, because no way Saransh Jain is losing possession of the ball, and there you go. There you go, a very well fought fight, but eventually Saransh Jain proving supreme, and they know that they're just one match away from securing their spot in the grand final. And Lokmanyu and Shubham quite gutted with the loss. It's a whitewash so far in the first leg, and TT, this is where you're gonna start feeling sorry for Kerala Blasters FC. जी हाँ, क्योंकि कल अगर उनको वापसी करना भी है तो तीनों के तीनों मैचअप जीतने होंगे, जो कि आज के गेम को देखने के बाद मुझे टफ लग रहा है। हालाँकि जो स्कोर लाइन था वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ था, लाइक ज़्यादा गोल स्कोर किसी की तरफ से नहीं हुआ था, ये गेम आने से पहले। फिर अचानक से सारांश एंड शुभम एक दूसरे के खिलाफ आ गए। सारांश जो कि इस पूरे सीज़न के अंदर हम लोगों को 2 गोल 1 गोल करते हुए दिखे थे, वो आके अचानक से 4 गोल दगते हुए दिखे, और उसी जगह पे शुभम, उनके एवरेज जो गोल्स रहते हैं यूजुअली लाइक वो 3 गोल कहीं न कहीं कर देते हैं। तो वो उसके साथ ही लाइक फिनिश करते हुए दिखे, बट आज एवरेज गोल जो है वो उनको बचाने के लिए काफ़ी नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी वो उससे ज़्यादा कंसीड कर चुके थे। तो यस, लाइक कल के लिए स्टेक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। ऑब्वियसली कल ग्रैंड फाइनल्स भी हैं, तो सब मिला के अगर देखा जाए कल का दिन जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा सिर्फ इंटरेस्टिंग ही नहीं, बहुत इमोशनल भी लेने वाला है, क्योंकि हर एक क्लब जो है वो कम्पीट करने वाले हैं कल के दिन पे ग्रैंड फाइनल पे क्वालिफाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड उसके बाद ये ट्रॉफी जीतने के लिए जो अभी प्लेयर्स के पीछे रखा हुआ है। Yeah, this is where you kind of feel sorry, right? Because the first half was so dementing. He was already 1-3 down, and then again, when you're just 3 goals down, it's so difficult. But still, somehow, Shubham fought till the end, gotten it so close. But unfortunately, the distance, the margin, that was so high. The walls unable to be broken, and this is where you start feeling for him, and for Kerala Blasters FC as a whole, because in the past they have done the unthinkable. They had been unstoppable, but when you're going up against a club like Northeast United FC, who have been so stellar in all their performances and who've got some players who are amazing when it comes down to LAN, what do you do? And this is it, the scorecard of the first leg of our second semi-final over here. Imad Rocks did manage to beat Lokmanyu. It was a tight one. And this time, Kerala Blasters FC literally did everything possible. It was really close. Again, that 1 goal differentiating. Third game, we saw some lot of goals being scored, but still, Shubham was just a goal shy, as Kerala Blasters FC 1 match away from facing elimination. And everything they have worked so far would go into vain. And on that note, I think they have a lot to do, lot to work upon, because no margin of error remains for tomorrow. But that being said, ladies and gentlemen, we are finally done with all our matches for the night. Tomorrow we're going to come back and we will find who gets to be crowned as the champion of the eISL.